Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. In previous video, I solved and explained Unit 5.1 Reading Comprehension A Bad Dream. तो आज हम इसी Comprehension A Bad Dream की exercise 1 to 7 solve करेंगे. So now let's start. Exercise 1, question answers. Question number 1, how many families were going on the trip? कितनी families trip पे गई थी? Answer, two families were going on the trip. एक मिस्टर अजीज की फैमिली थी और दूसरी मिस्टर करीम की फैमिली. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी घोस्ट स्टोरीज आर मेंशन इन द टेक्स्ट? इस टेक्स्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितनी स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज या इवेंट मेंशन किए गए हैं? आंसर, 3 घोस्ट स्टोरीज आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट. अब 3 स्टोरीज कौन कौन सी थी? नंबर 1, someone pulled the blanket of Mr. करीम. तो जब वो सोया हुआ था तो किसी ने उनका ब्लैंकेट जो था वो पुल्ड आउट किया. नंबर 2, had jumped and blocked his way. जो घोस्ट था, सो जब वो वॉक कर रहा था तो it was coming and had jumped and blocked his way. वो जिस रूट से जा रहा था वो अपना रूट चेंज कर रहा था, लेकिन वहीं से घोस्ट आ रहा था. नंबर 3, when Mr. Kareem and Mr. Aziz family were sitting at the dining table, chair beside them was pulled out and there was no indication of anyone's presence. तो ये 3 स्टोरीज जो 3 इवेंट्स उनके साथ हुए थे. क्वेश्चन नंबर 3, did any of the children experience something strange? Answer, no, the children did not experience something strange. बच्चों ने कोई ऐसा एक्सपीरियंस या उनके साथ कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ. एक्सरसाइज नंबर 2, work in pairs. Read the text and find the words in the given paragraphs that have the meanings given below. Write your answers in the answer column. The first one has been done as an example. अब देखें, पहले कॉलम में लिखा हुआ है पैराग्राफ, सेकंड कॉलम में मीनिंग और थर्ड में आंसर. अब सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में पैराग्राफ्स दिए गए हैं. There are 13 paragraphs in this reading comprehension. तो लेफ्ट कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें पैराग्राफ नंबर्स दिए गए हैं. जो कॉलम 2 है मीनिंग, उनमें मीनिंग्स दी गई हैं. कॉलम 3 है आंसर. अब आपको जैसे लिखा हुआ है पैराग्राफ 1, तो आपको पैराग्राफ 1 में फिर आपको मीनिंग पढ़नी है और फिर आपको बताना है कौन सा वर्ड है जिसकी ये मीनिंग है पैराग्राफ 1 में. तो फर्स्ट इज ऑलरेडी डन and remaining I have solved. So number 1 paragraph, meaning is something for which one has waited for a long time. अब ये मीनिंग है. पैराग्राफ 1 में हमको सर्च आउट करना है कि कौन सा वर्ड है जिसकी ये मीनिंग है. तो ये आंसर होगा लॉन्ग अवेटेड. पैराग्राफ 2, अब पैराग्राफ 2 में हमें देखना है मीनिंग है एन इनक्लोज्ड सेक्शन इन अ रेलवे कैरेज. अब ये मीनिंग है, आपको बताना है कौन सा वर्ड जो सेकंड पैराग्राफ में इसकी ये मीनिंग है. इसका आंसर होगा कंपार्टमेंट. पैराग्राफ 5, मीनिंग भी आपको दी गई है, टेक समथिंग फॉर अ लिमिटेड टाइम बाय पेइंग फॉर इट. अब कौन सा वर्ड पैराग्राफ 5 में ये जिसकी मीनिंग है, तो जो वर्ड है, जो आंसर है वो है रेंटेड. फिर पैराग्राफ 5 में है, मीनिंग दी गई है हैविंग प्रेजेंस ऑफ घोस्ट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हॉन्टेड. देन 10th पैराग्राफ, वर्ड इज किल्ड फॉर फूड, ये मीनिंग है. अब जो वर्ड होगा इसका होगा हैड जम्प्ड. फिर पैराग्राफ 10 में कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग है फ्राइटेंड, और जो वर्ड है पैराग्राफ 10 में वो है स्केर्ड. देन पैराग्राफ 11, मीनिंग इज कन्वर्सेशन दैट मे नॉट बी ट्रू. अब कौन सा वर्ड है जिसकी ये मीनिंग है? वर्ड इज गॉसिप. देन अगेन 11th पैराग्राफ, मीनिंग इज हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समथिंग. तो जो 11th पैराग्राफ में वर्ड है डोमिनेट, इसकी ये मीनिंग है. देन अगेन 11th पैराग्राफ, मीनिंग इज फॉर्म अ मेंटल पिक्चर. अब ये कौन सा वर्ड है 11th पैराग्राफ में जिसकी ये मीनिंग है? वर्ड इज इमेजिनिंग, इमेजिन करना, तस्वुर करना. एक्सरसाइज 3, work individually, read the text and provide one word answers in the given blanks. अब ये क्वेश्चंस हैं, आपको इनके one word answer लिखने हैं. A, what was the name of the station where they got off? इसका आंसर होगा पटनी.
B. Upon hearing the address, the first person who was surprised. इसका आंसर होगा Potter. C. Who was the second person who was surprised? आप इसको ड्राइवर लिखें या वैन ड्राइवर. D. For how many days was the trip planned? इसका आंसर है 10. वो 10 days के ट्रिप पे वो गए थे. E. How many bedrooms were there in the house? इसका जो आंसर है 3. F. Who had the first strange experience? इसका आंसर है Mr. Kareem. G. Who had the second strange experience? इसका आंसर होगा Mr. Kareem. दोबारा जो ये एक्सपीरियंस हुआ वो भी मिस्टर करीम के साथ ही हुआ था. H. What happened in the end of the story? इसका आंसर होगा ड्रीम, क्योंकि ये जो पूरे जितने भी इवेंट्स हो रहे थे वो एक ड्रीम था. एक्सरसाइज 4. वर्क इंडिविजुअली. Read the text and complete the following sentences by matching items in column A and B. Write your answers in the answer column. Column A में आपको हाफ स्टेटमेंट है, देन आपको आंसर लिखना है आंसर कॉलम में, और कॉलम बी में हाफ स्टेटमेंट है. आपको कॉलम ए की स्टेटमेंट कॉलम बी से मैच करके लिखनी है. नंबर 1 इज ऑन हियरिंग वेयर दे वर स्टेइंग. अब इसका आंसर जो है वो है ई. अब ई कौन सा आंसर है? 2 people asked whether they were sure. Number 2 statement. When the driver told Mr. Aziz that the house was haunted, इसका आंसर है H. Mr. Aziz said that he did not believe such stories. Number 3 statement. The house was big and eerie. इसका जो आंसर है वो है B, and had a nice view of the village and the fields. Number 4 statement. When the people in the village asked them to leave the house, इसका आंसर होगा F. They laughed and said that there was no such things as ghost. Number 5. They enjoyed the clean air of the village. इसका आंसर है A, and fresh vegetables from the fields. Number 6. They all felt happy and relaxed. इसका जो आंसर है 6 का वो है D, तो ये होगा they all felt happy and relaxed and did not want to go back. Number 7. Nothing happened for a few days. इसका आंसर है G, तो ये होगा nothing happened for a few days, then strange things started happening. Last, number 8. On the last morning, they got out of bed very early. इसका आंसर है C, तो ये होगा on the last morning they got out of bed very early and quickly left for the station. Exercise 5. The following sentences give wrong information. Work in pairs, read the story, and write the correct sentences in the space provided below each statement. अब ये statements हैं, जो information है वो reading comprehension से select की गई है, but इनमें कोई mistakes हैं, wrong information है, वो आपको correct करनी है. Number 1 statement. Mr. and Mrs. Kareem and their children planned the holiday. इसका आंसर होगा Mr. and Mrs. Aziz and their children planned a trip on the holiday. जो correct है वो होगा Mr. and Mrs. Aziz और उनके children ने, मतलब पूरी family ने ये trip plan किया था. Number 2. Mr. and Mrs. Aziz and their children decided to join them. तो ये incorrect है, correct होगा Mr. and Mrs. Kareem and their children decided to join them. जो दूसरी फैमिली थी Mr. और Mrs. Kareem की, उन्होंने उनको ज्वाइन किया. Number 3. They planned a 3-month trip. It's incorrect. Correct होगा they planned a 10 days trip. Number 4 statement. They traveled by bus and reached a village called Patni. इसका आंसर होगा they traveled by train and reached a village called Patni. Number 5 statement. They hired a taxi to reach the house. Correct statement is they hired a van to reach the house. Number 6. Mr. Aziz told the driver that they had bought the house. इसका जो आंसर होगा correct. Mr. Aziz told the driver that they had rented the house. उन्होंने वो रेंट पे लिया था, खरीद नहीं किया था. Number 7 statement. He told him that the house was old, but Mr. Aziz did not believe him.
इसका जो करेक्ट आंसर होगा, he told him that the house was haunted, but Mr. Aziz did not believe him. Number 8, when they reached the house, nobody liked it. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, when they reached the house, everybody liked it. Number 9th statement, the children got the cleanest room. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, the children got the third room. Number 10th, after dinner, they went to bed quite late as they were very tired. इसका जो करेक्ट आंसर होगा after dinner, they went to bed quite early as they were tired. Number 11, after 2 days, they went into the fields. इसका जो आंसर होगा, the next morning, they went out into the fields. Number 12 statement, they met some people and they told them to sell the house before they were harmed. इसका जो करेक्ट आंसर है, they met some people and they told them to leave the house before they were harmed. Number 13, strange things started to happen on the 5th day. इसका जो करेक्ट आंसर है, strange things related to happen on the 7th night. Number 14 statement, first Mr. Kareem, then Mrs. Kareem, and finally they all had strange experiences. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा first Mr. Kareem, then again Mr. Kareem, and finally they all had strange experiences. पहले मिस्टर करीम के साथ, फिर दोबारा मिस्टर करीम के साथ, और फिर फाइनली सबके साथ ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ. Exercise 6, work individually, combine the points from exercise 5 and write a summary of the story in your notebook. You can add other points. Also, write an alternative ending of the story. आप ये वर्क इंडिविजुअली करेंगे और पॉइंट्स कंबाइन करेंगे एक्सरसाइज 5 से, और फिर एक समरी बनाएंगे अपने नोटबुक में. आप अपने पॉइंट्स में इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस स्टोरी की अल्टरनेटिव एंडिंग भी आप लिख सकते हैं. अब मैं आपको ये समरी पढ़ के बता रहा हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर समरी विथ यू. Mr. and Mrs. Aziz and their children planned a trip on the holiday. Mr. and Mrs. Kareem and their children also decided to accompany them. They planned a 10-day trip. They traveled by train and reached a village called Patni, where they had rented a house. They hired a van to reach the house. Mr. Aziz told the driver that they had rented the house. The driver told him that the house was haunted, but Mr. Aziz did not believe it. When they reached the house, everybody liked it. It had 3 bedrooms. One room was for Mr. and Mrs. Aziz, another for Mr. and Mrs. Kareem, and the children got the 3rd room. After dinner, they went to bed quite early as they were tired. The next morning, they went out into the fields where they met some people who told them to leave the house before they were harmed by some ghosts. They ignored the gossips. Strange things started to happen on the 7th night. Twice Mr. Kareem, first at home, then in the field, and finally all had experienced these strange things. At the end, Mrs. Kareem woke up Mr. Kareem. It was a horrible dream. Exercise 7. ये ग्रुप एक्टिविटी है. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5. आप ग्रुप्स बनाएंगे और हर ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स होंगे. थिंक ऑफ अ गुड ड्रीम एंड डेवलप अ शॉर्ट रोल प्ले. कोई अच्छा सा आप ड्रीम सोचें जो आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा हो, और फिर एक शॉर्ट रोल प्ले आपको परफॉर्म करना है. डिसाइड हु इज गोइंग टू डू और से व्हाट. आप डिसाइड करेंगे कि कौन ग्रुप्स में परफॉर्म करेगा या कौन उसको प्रेजेंट करेगा. Every group will have 3 to 4 minutes to perform their role play in front of the class. हर ग्रुप को 3 से 4 मिनट्स दिए जाएंगे, तो वो जो उनका रोल प्ले है वो क्लास में परफॉर्म करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ग्रुप्स. तो ये थी एक्सरसाइज 1 to 7 जो मैंने सॉल्व की. उम्मीद है आपको सारी समझ में आई होंगी. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप हमें कमेंट बताइएगा. वी ऑलवेज वेलकम योर फीडबैक. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट यूनिट 6 कैरेक्टर बिल्डिंग. इस यूनिट में एक इंटरेस्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. यूनिट 6.1 पोम स्पीक जेंटली. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.